Practice makes the man perfect, and this statement is even true for your RBI Grade B examination, because if you want to clear this examination, mock test is going to play a really very important role. Now, the question is why mock test is important for examination like RBI? Then my answer is it is not only important for exams like RBI, but if you are preparing for any competitive examination and if you are not attempting the mock test, and that too in right way, it will be impossible for you to clear this examination. When we talk about RBI, which is one of the most competitive examination of the country, where you need to have accuracy, speed, as well as mental stability while attempting this examination, in that case mock test is going to play a crucial role. Welcome guys, my name is Madhav Sir. I welcome you in the next video where I will be discussing the importance of mock test. Along with that, I'll share the insights how to attempt a mock test so that you can have better effects of this practice while attempting the final examination. So I'll start my discussion with the first point, what actually the mock test is. If you ask me what is mock test, then it is a practice test. That means you feel the same pressure, you attempt the same level of examination within the same timelines, and you feel that pressure which you are going to witness or the same conditions which you are going to witness in the final examination. अब आप सोच रहे होंगे कि सर इन conditions को feel करने का फायदा क्या? इन conditions को feel करना बहुत जरूरी है, because if you are not feeling these conditions, it will be impossible for you to handle those tough conditions during the show day. So I don't want कि जो आपका D-Day है वो खराब हो बस इसलिए क्योंकि आपने mock test को attempt नहीं किया, आपने उस pressure को feel नहीं किया before going for the examination. Second point. So what are the benefits associated with mock test? If you attempt a mock test, undoubtedly you will be able to identify your strength as well as weakness. And once you have identified your weakness, you can work in the right direction so that this weakness can be overcome and you can attempt good questions in the weak areas as well. दूसरा point है, it will help you to improve your time management. It will reduce, very important, it will reduce your एग्जाम एंजाइटी. कैसे? अगर आपने एग्जाम से पहले 10 या 15 मॉक टेस्ट दिए फॉर फेज 1 एग्जामिनेशन, तो जिस दिन आप आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 एग्जामिनेशन में बैठेंगे, यू विल बी वेरी क्लियर कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये मेरे वीक एरियाज हैं, दीज आर माय स्ट्रॉन्ग एरियाज, आई विल बी अटेम्प्टिंग ओनली माय स्ट्रॉन्ग एरिया सो दैट आई कैन क्लियर the basic qualifying marks, that is the basic sectional cutoff. Same goes for reasoning, but in case of English and general awareness, you know कि ये दो ऐसे सेक्शन हैं जिनके लिए I have to fight till the end so that I can score more and more marks in these two sections, क्योंकि ये वो दो सेक्शन है जो मुझे overall cutoff clear करने में मदद करेंगे. So that is what I call it as, it will help you to reduce the anxiety. वहां पर जाके ये सोचना नहीं होगा क्या attempt करूं क्या नहीं. आपने इतनी बार mock test attempt की है, now you can identify just with a glimpse of a question कि क्या ये question doable है या नहीं, or whether it is a difficult question. If it is difficult, I'll look over it in the end. Last but not the least is, it is going to boost your confidence. Why? If you are able to score more than 80 marks in the phase 1 mock test, that means you are a strong candidate and you are surely going to clear this examination, keeping in mind the past cutoff trend which have been witnessed since 2021 once the RBI has introduced the descriptive writing section. Not only this, the fifth and the most important benefit of clearing or attempting the mock test is your performance analysis. How? What I'm trying to say? So performance analysis basically means when you attempt a mock test, you can review that what is your accuracy, especially in case of quantitative aptitude as well as reasoning. What is your speed when you are attempting specifically the phase 1 examination, and how well you are in solving the topic wise questions. That means क्या DI के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, क्या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो रहा है या पजल सॉल्व हो रहा है, और अगर लगे कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सॉल्व नहीं हो रहे, देन यू शुड टेक अ कॉल कि हम एग्जामिनेशन में भी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल अटेम्प्ट नहीं करेंगे. आई विल बी अटेम्प्टिंग रेस्ट ऑफ द एंटायर एग्जामिनेशन इन द रीजनिंग एक्सेप्ट सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल. सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी will be built if you are attempting the mock test, and it will help you to fine tune your strategy. The way I said, for sitting arrangement puzzle, the same goes for your quantitative aptitude strategy, same goes for English कि English में अगर हम attempt कर रहे हैं, how many minutes I should invest on
parajumble based question, how many minutes I should invest on reading comprehension so that I can clear or I can read at least all the question before the time is gone, because we have a sectional timing in case of phase 1 examination. Moving on to the sixth and the most important skill which is going to be developed by attempting the mock test is time management. See, if I talk about phase 1, it has 200 questions which you need to attempt in 120 minutes. 200 questions are need to be attempted in 120 minutes, and even you have 25 minutes each for quantitative aptitude, for reasoning, for quantitative aptitude, for English, for general awareness, and you have 45 minutes for reasoning. So if you are attempting the mock test before going for the examination, then only you can handle 30 questions of English and quantitative aptitude in 25 minutes, 80 questions of general awareness in 25 minutes, and 60 questions in 45 minutes for your reasoning part. Not only this, if I go for phase 2, in case of phase 2, you will get 90 minutes. You will get 90 minutes for paper 1 descriptive section, where you need to answer 2 15-marker question, as well as you need to answer 2 10-marker question, where the word limit for 15 marker is 600. That means कुल मिला के 1200 words लिखने हैं for 15 marker, and you have to write around 800 words for 10 marker. यानी 2000 words को आपको टाइप करना है in 90 minutes. If you divide them 2000 words in 90 minutes, that means you have to divide 200 by 9, almost 22 words in 1 minute, which is not an easy task, where you have to increase your speed, and that can only be done if you are attempting adequate number of mock tests before going for the examination. So it can help you that you can allocate your time as per your convenience for the examination. For example, you have allocated कि out of 25 minutes I will be spending 15 minutes only on DI, out of 45 minutes I will be spending 30 minutes only on sitting arrangement and puzzle. So this is what you need to improvise while attempting the mock test. Then it will help you to avoid time traps. जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा ये क्वेश्चन मुश्किल है, without wasting even a single minute, just leave that question so that you can attempt the next one. Last but not the least is, it will help you in smart skipping. The more you skip, the more questions you ignore, the chances to clear this examination increases. आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? भैया 200 क्वेश्चंस आने वाले फेज 1 में, और उन 200 में से आपको मार्क्स चाहिए अराउंड 80. दैट मींस कम से कम 100 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बाउंस कर सकते हैं, जो आप छोड़ सकते हैं. तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, एक छोड़ दीजिए, एक अटेम्प्ट कीजिए, एक छोड़ दीजिए. ऐसा कौन सा एग्जाम होगा जिसमें आप एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, फिर भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे? विच मींस एग्जामिनेशन का लेवल अच्छा होगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा. तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को, अटेम्प्ट करना ओनली एंड ओनली द स्ट्रॉन्ग एरिया, सो दैट यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. दूसरा पॉइंट आता है कि सर अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, देन ओनली यू विल गेट familiar with the syllabus, familiar with the pattern of the examination. For example, for phase 1, 4 sections, 200 questions, 120 minutes. In phase 2, 3 paper 1, paper 2, paper 3, तीनों पेपर 100 marks each, total 300 marks का पेपर एक ही दिन में आपको अटेम्प्ट करना है. So this requires more and more understanding. This requires how well you hold yourself for that entire long day to attempt the examination, not only for phase 1 but also for the phase 2 examination. This is my favorite. Mock test helps you to build your exam stamina. जैसे कि मैंने अभी कहा, phase 2 में paper 1, paper 2, paper 3. अगर हम paper 1 और paper 3 की बात करें, इट इज 120 मिनट्स ईच, यानी कि 2 घंटे प्लस 2 घंटे, 4 घंटे का तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 और पेपर 3. और पेपर 2 की बात करें, इट इज ऑफ 90 मिनट्स. तो कुल मिलाकर 5.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 2 शिफ्ट्स में होगा, एक ही दिन में अटेम्प्ट करना होगा. इसके लिए स्टैमिना होना बहुत जरूरी है. पता चला कि आप घर पे सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, आधे घंटे में आपने मैथ्स खत्म किया, उसके बाद यू टेक अ ब्रेक एंड देन यू कम बैक एंड सॉल्व रीजनिंग, तो आपका दिमाग आधे घंटे से ज्यादा चल नहीं पा रहा. और अगर आपका दिमाग आधे घंटे से ज्यादा चल नहीं पा रहा, हाउ यू आर गोइंग टू होल्ड योरसेल्फ इन 5 hours 30 minutes of entire show which you are going to face in the phase 2 examination. So be ready for this show beforehand, and it will be possible only and only with the help of one thing, that is attempting more and more
मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपको मॉनिटर करना होगा कि जब मैंने पहला मॉक टेस्ट सॉल्व किया था फॉर फेज 1, व्हाट वाज माय स्कोर, और आज 10th मॉक सॉल्व कर रहा हूं तो आज मेरा स्कोर क्या है, मेरी स्पीड कितनी है, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, क्या मैंने अपने टारगेट को अचीव किया। मान लो पहले दिन जब मैंने मॉक टेस्ट दिया आई गॉट 40, मैंने टारगेट सेट किया कि नेक्स्ट 5 टेस्ट आई शुड रीच 60, रियलिस्टिक टारगेट सेट किया है नेक्स्ट 5 टेस्ट आई शुड रीच 80। दैट मींस अगर मैं 10th टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं और अगर 10th टेस्ट के दिन मेरे पास स्कोर 80 है, दैट मींस आई एम डूइंग वेल। और अगर अगले 10-12 टेस्ट में ऑल सॉल्व करता हूं, आई कैन easily go to 90 to 95 marks, which is more than sufficient before you sit in the final examination, keeping in mind the level of the exam which has been asked since 2021। और इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। द मोमेंट यू रियलाइज कि भैया इंग्लिश सही चल रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज गोइंग गुड, रीजनिंग इज गोइंग गुड, बट जनरल अवेयरनेस इज स्टिल अ टफ कॉल, देन यू कैन टेक अ कॉल, यू कैन मैनेज योर स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली सो दैट यू कैन इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन जनरल अवेयरनेस टू क्लियर द एग्जामिनेशन और टू स्कोर प्रीटी वेल मार्क्स। अब अगर आप मुझसे पूछे कि व्हाट इज द राइट वे टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट फॉर एनी एग्जामिनेशन, देन आई वुड से attempting a mock test is just a 20% task। ये सिर्फ और सिर्फ 20% टास्क है, एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सिर्फ अटेम्प्ट करते हैं मॉक टेस्ट एंड दे फील मजा आ गया, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, अब मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। दैट इज नॉट द केस। You have just done the 20% of the work, 80% of the work is your analysis। एनालिसिस में करना क्या है, सबसे पहले you have to identify कौन कौन से क्वेश्चंस आपने गलत किए, चेक करो कि वो क्वेश्चंस गलत क्यों हुए, whether you were not clear with the concept or you have done any kind of silly mistake या फिर you were not even aware of that particular topic। तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। Secondly, you need to identify those questions which you have not attempted। अब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, and just read those question once कि भैया ये DI का क्वेश्चन था, I am planning to attempt DI in the examination, but today I have not attempted DI because I felt it is difficult। Let's check out how was the or what was the level of this particular question। Lastly, you need to check your skipping skills कि जो questions मैंने skip किए ये सोचकर कि these are the difficult questions, क्या टेक्निकली वो डिफिकल्ट थे। इफ दे आर डिफिकल्ट दैट मीन्स आई एम गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, आई शुड स्किप द क्वेश्चन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग द वे आई एम डूइंग इट इन द मॉक टेस्ट, आई विल बी फॉलोइंग द सेम इन माई फाइनल एग्जामिनेशन एज वेल। तो एनालिसिस करने के बाद यू नीड टू रिवाइज योर वीक एरियाज, वो टॉपिक्स जो आपको लगता है कि आपने पढ़े हैं बट यू हैव डन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, they are really very important, revise them। After revision, practice those weak areas thoroughly, and once you feel that yes you have practiced the weak part and you have tracked your improvement over the period of time, then attempt a next mock। For example, अगर हम आज की बात करें, we are expecting कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा that will be around 15th of July। तो अगर आप आज से हर वीक एक मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले, तो आज आपने अगर संडे को ये मॉक टेस्ट सॉल्व किया, संडे को ही आपने एनालिसिस किया, फिर ये वाली जो प्रैक्टिस है दैट इज गोइंग टू बी डन फॉर नेक्स्ट 6 days, और फिर 7 डे को आपने फिर से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, एंड देन यू आर अगेन ट्रैकिंग योर इंप्रूवमेंट। और अगर आपने ये पार्ट कंटिन्यू किया टिल योर एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी गाइस, एग्जामिनेशन उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा जितना अभी तक आप फील कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव डन रियली वेरी वेल on the back end before going for the final examination। इसमें 2 points और ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहला point is some of the common mistakes which generally candidates make while attempting a mock test। The first one, you are taking a mock test but you are not analyzing it, you are ignoring your weak areas, you are rushing without strategy and you are inconsistent in attempting the mock test। अगर ये 4 गलतियां की तो ट्रस्ट मी गाइस, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का कोई फायदा होगा नहीं। इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। मत करना, या तो अटेम्प्ट करना मॉक टेस्ट को तो पूरे के पूरे प्रोसेस को फॉलो करना, लेकिन इफ यू थिंक यू आर मेकिंग दीज मिस्टेक्स एंड यू डोंट वांट टू रेक्टिफाई एंड रिजॉल्व दीज मिस्टेक्स, देन स्टॉप अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी केस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। लास्ट but not the least is, along with the pattern which I just told you how to attempt a mock test, I would love to add few terms। First one, जैसे ही आपको लगे कि आपका 50% सिलेबस डन है फॉर फेज 1 और फेज 2, स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट।
Second is analyze every test thoroughly. This is very important. Maintain a mock test journal. What is this maintain a mock test journal? सर एक नोटबुक लगा लो, उस नोटबुक पे लिख दो डेट, जिस डेट को आपने टेस्ट किया था, कौन सा टेस्ट था। मान लो आज आपका पहला मॉक टेस्ट था राइट एट 1, फेज 1 के लिए था, फेज 1 था, कितना स्कोर किया आउट ऑफ ऑब्वियसली 200, कितना टाइम आपने कंज्यूम किया, क्या 120 मिनट्स पूरे कंज्यूम किया, उससे पहले ही आपने मॉक टेस्ट सबमिट कर दिया बिकॉज यू वर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, फिर आपने वहां पे क्या क्या मिस्टेक्स की, उस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके वीक एरियाज क्या थे। दिस इज अ शॉर्ट नोट विच यू नीड टू मेंटेन फॉर योर एवरी मॉक टेस्ट। और हर रोज जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें तो सेकंड मॉक टेस्ट का जब एनालिसिस आप नोट डाउन करें इस जर्नल में और रीड करें, कंपेयर करें फर्स्ट मॉक टेस्ट के जर्नल के साथ, क्या इंप्रूवमेंट हुई है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुई दैट मींस इट्स अ पॉइंट टू वरी। वहां पे बैठो, समझो, और जो इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही कोशिश करो, टारगेट सेट करो कि वो इंप्रूवमेंट आपको आपके थर्ड मॉक टेस्ट की समरी में जरूर दिखनी चाहिए। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्रेजुअली इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट। लोग क्या करते हैं, आज मेरी वीडियो देखी, आज से ही भर भर के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने शुरू कर दिए। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जामिनेशन से जस्ट पहले अगर मैं कहूं 15 जुलाई लेट्स से इट इज द डी डे, तो 15 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो 1 से 15 जुलाई के बीच यू नीड टू अटेम्प्ट 7 टेस्ट, मींस ऑन ऑल्टरनेट डेज यू शुड अटेम्प्ट द फेज 1 टेस्ट, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे and June you should attempt at least 1 test on weekly basis. This will keep you in practice और उसके साथ साथ जैसे ही एग्जामिनेशन राउंड द कॉर्नर होगा we'll increase the frequency accordingly. आज ज्यादा पढ़ो, अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट कम, लेकिन जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए कंप्लीट देन ट्राई टू अटेंड मोर एंड मोर मॉक टेस्ट इन ऑर्डर टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। आई होप दिस शॉर्ट वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर अभी भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए कुछ गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो दिस वीडियो, डू rectify those mistakes in order to clear your examination in the very first attempt. If you like the video, do comment in the comment section below and do suggest me on what topic you are looking forward for the next strategy video from my side. Bye bye guys, good luck, God bless you all.